Committee for scheduled class employees, reserve category employees yesterday. That committee has been given the job to look into their comprehensive transfer policy. We have been ignored in it. This is only because of the reason that the scheduled caste or reserve categories Jammu-based people, they are vote bank, and we minority Pandit community employees or community people, they are ignored, always put in the backtrap because we don't fall into the vote category. So we request the government of India as well as administration, they should take very serious steps. We too are under great threat as they are. The comprehensive transfer policy, the committee has to be framed from we people. Sir, we are saying continuously you are asking for relocation. What happened to that question? We have been asking government to put our security and safety as the prime concern. We have made many pleas to government. They should call us up because only once the LG had met us. We have been pleading that given an opportunity to us, we would discuss the things. We will try to see how the security and safety of employees will be looked upon, but that is not the thing. The government is not taking us seriously. Sir, do you think LG administration is looking into this matter seriously, or are they doing any kind of this? They are not serious at all right now. With respect to our safety and security, that is our main concern. I told you, we have not been given any chance to put up our demands. We have been asking administration that as they had called us once, they should call us again. We too need a solution to it. We too want that we should be productive people. For that, they have to call us, we have to speak, right? जो राहुल भट्ट जो हमारे शहीद हुए, हमारे भाई जो शहीद हुए, उनको 3 महीने हो गए। एलजी मीट के बाद हमें थोड़ा उनसे आश्वासन मिला था कि हमारी जो डिमांड्स है उन पर गौर किया संज्ञान लेंगे, बट उन्होंने बेशक ली है कुछ डिमांड्स पे संज्ञान, मगर जो मेन था ट्रांसफ़र पॉलिसी पे उस पर कोई अभी संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम अपनी कॉलोनीज़ में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट हम कोई मतलब रोड ब्लॉक नहीं कर रहे थे। हम अपने धरने पे अभी जारी रख रहे थे, बट क्या हुआ, परसों जितेंद्र सिंह और अमित शाह जी जब जम्मू आए तो उनके जाने के बाद ही एक ऑर्डर नहीं, एक ऐसे बोला गया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कमेटी बनाई गई है ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए, कुछ भाइयों के लिए, बट हमारे लिए कुछ सोचा नहीं गया। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, कमेटी बिठाई गई है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बिठाई गई है? ये इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी मतलब इसका यही मतलब है कि उनसे वोट आते और हमसे वोट नहीं आते, तभी उनके लिए कमेटी बिठाई गई और हमारे लिए कमेटी नहीं बिठाई गई। क्या यही रीज़न है? और दूसरी एक और बात, NIA SIT का जो राहुल भट्ट की जब किलिंग हुई थी तो उन पर बिठाई गई थी, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो उनके माँ बाप। Committee for scheduled class employees, reserve category employees yesterday. That committee has been given the job to look into their comprehensive transfer policy. We have been ignored in it. This is only because of the reason that the scheduled caste or reserve categories Jammu-based people, they are vote bank, and we minority Pandit community employees or community people, they are ignored, always put in the backtrap because we don't fall into the vote category. So we request the government of India as well as administration, they should take very serious steps. We too are under great threat as they are. The comprehensive transfer policy, the committee has to be framed from we people. Sir, we are saying continuously you are asking for relocation. What happened to that question? We have been asking government to put our security and safety as the prime concern. We have made many pleas to government. They should call us up because only once the LG had met us. We have been pleading that given an opportunity to us, we would discuss the things. We will try to see how the security and safety of employees will be looked upon, but that is not the thing. The government is not taking us seriously. Sir, do you think LG administration is looking into this matter seriously, or are they doing any kind of this? They are not serious at all right now. With respect to our safety and security, that is our main concern. I told you, we have not been given any chance to put up our demands. We have been asking administration that as they had called us once, they should call us again. We too need a solution to it. We too want that we should be productive people. For that, they have to call us, we have to speak, right? जो राहुल भट्ट जो हमारे शहीद हुए, हमारे भाई जो शहीद हुए, उनको 3 महीने हो गए। एलजी मीट के बाद हमें थोड़ा उनसे आश्वासन मिला था कि हमारी जो डिमांड्स है उन पर गौर किया संज्ञान लेंगे, बट उन्होंने बेशक ली है कुछ डिमांड्स पे संज्ञान, मगर जो मेन था ट्रांसफ़र पॉलिसी पे उस पर कोई अभी संज्ञान नहीं लिया गया। तो हम अपनी कॉलोनीज़ में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट हम कोई मतलब रोड ब्लॉक नहीं कर रहे थे। हम अपने धरने पे अभी जारी रख रहे थे, बट क्या
हुआ परसों जितेंद्र सिंह और अमित शाह जी जब जम्मू आए तो उनके जाने के बाद ही एक ऑर्डर नहीं, एक ऐसे बोला गया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कमेटी बनाई गई है ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के लिए कुछ भाइयों के लिए, बट हमारे लिए कुछ सोचा नहीं गया। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, कमेटी बिठाई गई है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बिठाई गई है? ये इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी हम मतलब इसका यही मतलब है कि उनसे वोट आते और हमसे वोट नहीं आते, तभी उनके लिए कमेटी बिठाई गई और हमारे लिए कमेटी नहीं बिठाई गई। क्या यही रीज़न है? और दूसरी एक और बात, NIA SIT का जो राहुल भट्ट की जब किलिंग हुई थी तो उन पर बिठाई गई थी, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो